Okay, Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. So last time we were discussing relationship between objects, and we talked about two kinds of relationships basically. One was the is a relationship that we called inheritance, as well as subtyping or generalization. So we gave it plenty of different names, and you may find these names like they would be used in different types of literatures. Okay. And the other relationship that we talked about was the has a relationship. So we discussed the is a relationship in detail, and we will discuss the has a relationship in much more detail later on. Now, right now in this particular session, I'm going to demonstrate the is a relationship or inheritance. So we will implement this very simple class hierarchy. Okay, so this is something that you may find that you will always find in much more complicated form in a real bank. So in this class hierarchy, we have the very basic class account. It has these data members and member functions. It has just one data member. Okay, so it should have other data members, but to keep things simple, we are supplying just one data member, and that is balance. So this data member would store the current balance of this account. Its data type would be double, and if you look at this symbol here, this is minus. This basically shows that it is going to be a private data member. Okay, when you see this plus sign, that means that this particular member function or data member would be public, so it would be accessible to everyone. Now this is a class hierarchy, and this is kind of a very simple class diagram, and such class diagrams are created in a tool that is called UML, or Unified Modeling Language. Okay, so unified modeling language is a tool that is extensively used in the software industry, and they use it to basically understand and describe a software system, and not just a software system, much more than that. Okay, so I just mentioned here UML, Unified Modeling Language. We do not have time to go into that. This is just one simple example of how a class hierarchy is shown in the form of a UML diagram. Okay, so we will have this basic class account. It will have a private data member balance, and public member functions get balance, credit to deposit some money into the account, and debit to withdraw some money from the account. And these member functions would be public. Then we would derive or extend this, derive new classes from this class. So our account class would be our base class, and we would extend it to create these two new classes, the savings account class and the current account class, and I'll show you how you can do it. So when we extend this account class into the savings account class, the savings account class will have by default all these data members and member functions. Why? Because it is inheriting from the account class, from the base class. Okay, so it will inherit all the attributes and all the behavior, whether it is public or whether it is private. All that behavior and all those attributes, they will be inherited into the savings account class. Okay, and the savings account class is a specialized version of the account class, so that's why it will have some of its own unique characteristics. Okay, so what are the unique characteristics of savings account class? So every savings account has an interest rate. So a savings account, basically people use it to earn some money or interest or profit, and it will have some interest rate, that is a private data member, and it will have a function called calculate interest. Okay, so we are also trying to keep savings account simple. So this is basically a type of savings account with a fixed interest rate. Okay, now interest rates can change, and then there are other things that can happen, but this is a very simple account class. Then we will have a current account class, which will also be a specialized version of the account class. It will have all the attributes and behavior of the account class, as well as some of its own new behavior. So its own new behavior is the current account
it basically does not earn any interest. Okay, it is just like you avail the banking services through the current account, and for availing the banking services you pay some fee. So that fee might be a fixed fee for every transaction. Usually whenever you're trying to withdraw some money from the bank account, so then you will the bank may charge you some fee. Okay, so let's get started and let us create this class hierarchy, and let us see how does it happen. Okay, so let us create a new project. It would be a console application, and it would be written in C++, and then you can here you can specify the title for the project. So these are, say, account hierarchy. Okay, account hierarchy. Now this is not a very good name, but let us go with it. So we are creating this project. So when you create this project, you just have this one source file, okay, the main.c++ source file. Now we need to define these new classes: the account class, the savings account class, and the current account class. So in order to define those classes, we need to add a header file to put all the declarations, and second, we need to add a source file where we would provide a definition of those classes. So let us do that. Let us create a new file, and this new file would be a C++ header file, and the header file would be included. This is important. You should, whenever you add a new file, you should ensure that it is included in both the debug and release versions of the project. Okay, so select all here, and then select a path for the file. Like, you need to save it somewhere, and this is the folder for our project, account hierarchy. So let us save it here. Now this would be our header file, and the header file would contain definitions. The header file would contain declarations of all our classes, and these classes are related to accounts. Okay, so let me name this header file as accounts. This is accounts. Okay, so it would be accounts.h. We'll include this header file in our project then. So we added this header file into our project, and here in the project explorer window you see there's a new folder, headers, and in that folder you can see the accounts.h header file. It's there. Okay, fine. So here we can provide the declaration of our classes. So we can specify which classes do we have and what are the attributes and behaviors of those classes. We'll need another source file to implement these classes. Okay, so let us add it now, and we'll need a C++ source file. It should also be included in both the debug and release versions of the project. If you don't do it, everything would be fine and your project would still not work. Okay, so you should always ensure that you add every new file to both the debug and release versions of your project. Okay, so this class would contain the implementation of all the classes in this file. Source file would contain the implementation of all the classes in the accounts.h header file. So let us name it as accounts.c++. Okay, so now we have another source file here, and it is accounts.c++. Now let's get started. Let us start implementing our classes. Okay, so the first class that we want to create is the account class. This is again simple. Account, we have done it. Like, we know how to create a class, how to define a class. It has just one private data member, and that is double balance. Okay, and it has these public member functions.
These are the public member functions that it has. Get balance, credit, debit, and here we have not included the constructor functions. Okay, so we'll include the constructor functions as well. First of all, we will include or define the default constructor. It should have a default constructor. Second, it should have an overloaded constructor that would provide an initial balance. Okay, initial balance. And then it would have the get balance function. Now the get balance function would be used to read the balance, to return the balance. So its return type should be double. It would return the current balance, or basically the balance, the value of the balance that would be returned. Then we need to have a credit function. Okay, so credit function, we did not specify any return type here. You can determine what we know is, like, you should specify some amount that should be credited or deposited into your account. So credit basically means, for the case of account, credit basically means a bank account. Credit basically means that you are depositing some money into your account. Okay, and debit means that some money is being withdrawn from your account. Okay, so the credit function, it does not need to have a return type. Okay, or you can return the updated balance. You can return the new balance after the amount has been credited into your account. So that depends upon you, the programmer, or upon the requirements of the bank. If the bank wants such facility, so you can do that. You can return after every credit transaction, you can return the updated balance. Okay, so you can do that, or you can keep it just simple as void. So let us say return the updated balance, no problem with that. So double credit, and here we specify double amount. Okay, now this is the argument to the credit function. This is basically the amount or money that we want to deposit into our account. Okay, so this must be here. This thing is optional. The credit function is returning a double value. Which double value? Now this is optional. So I said that we will return the updated balance. Okay, so that the get balance function does not need to be called. Or, like, you can drop this plan. You can drop this plan. So it is up to you. You can return it or you can drop it. So let us keep things simple. Let us drop it. So the credit function will not return any value. Okay, it does not need to return any value unless there is some practical requirement for doing that. What it needs is, it needs some amount that should be deposited into the account, that should be added to the balance. Okay, that is what it needs. Okay, the next function that we need to have is the debit function. Okay, this function, debit. Now debit is withdrawal, taking money out of your account. Now you can always deposit money into your account, and that would always be true. Like, it will not have any problem, no matter how much money, like, you want to deposit. So it will go through. If the bank is open and everything is fine, that transaction will go through. But debit is may not always happen. For example, if you have 10,000 rupees in your account and you want to withdraw 20,000, that is not going to happen. Okay, so debit can be successful and cannot be successful. Okay, so it makes sense that you return some value. So what kind of value can you return? You can return many values, but let us return a Boolean value, true or false. So if the debit transaction is successful, we'll return a true value. If it is not successful, we'll return a false value. So bool debit. Why bool? Because we want to return true if the debit is successful, and we want to return false if it is not successful. And then you specify double amount, the amount that you want to withdraw. Okay, so this is our simple account class. Right now we have not specified any other class. Okay,
first of all, let us implement and test this class. I'm copying these functions because I have to provide definitions for these functions. And here, let me first include the accounts header file. Then let me include the IO stream header file. And let me say using namespace std. Okay, so we need to define all those functions. So these are the functions, and we need to define these functions. So this is basically the constructor of the account class. We need to do this scope resolution because this file will have the implementation of other member functions from other classes as well. Okay, so this is our account class, and this is the overloaded constructor of the account class. This is the get balance function of the account class. Okay, so account and then the scope resolution operator. This is the name of the class. So we are basically specifying that get balance is a member function of the account class. Okay, so this is complete scope resolution. And then the credit function, and then the debit function. Okay, so we are done with fixing the signature of the function. Now let us do the implementation. So let us get rid of these semicolons, and let us provide bodies for these functions. Okay, so this is the default constructor. Now in the default constructor, we will initialize the balance to a certain default value. Now every bank, like, it may have certain requirement. So if you want to open an account, so there may be some minimum requirement for balance, but that requirement might change from account type to account type. So for a basic account, for a generic account, let us keep it to 0. Okay, so whenever a new account is created, the balance is always 0, and whenever that new account is created using the default constructor, the balance is always 0. And here we want to print out this message. Why? Now this may not be required when you're writing actual code. So you should never do such a thing. This is unnecessary. We are doing it because I want to show something, like when this constructor is executed. So we want to learn about that. This is important because we are going to extend the account class and create new classes based upon the account class. And when objects of those classes are going to be instantiated, so those objects are going to invoke this constructor function. Okay, they may invoke this constructor function. So that is why I'm putting this cout statement here. Okay, so here I just want to print the class and the method that was called. So this is basically the default constructor of the account class. Okay, so account class and the default constructor of the account class, this was executed. When this thing is printed, we'll know that the default constructor of the account class was executed. This function was executed. Okay, now this here, what we are going to do is we will just copy this thing and paste it here. This is the overloaded constructor. Now in the overloaded constructor, we are provided with the initial value of the balance. Okay, so we can initialize balance with this initial value, and here we can specify that this is basically the overloaded constructor. Okay, so this is basically the overloaded constructor that was executed. Okay, fine. The get balance function, it does nothing but simply returns the value of the balance. Okay, so this is what it does: return balance.
So whatever is the current value of the account balance, that would be returned to the caller function. Okay. The credit function, again, it is also very simple. What we are trying to do here is we are trying to deposit some money into this account. Okay, and we don't need to as such we don't need to do any validation. In reality, like whenever you go to a bank account and you are trying to deposit some money, so you always provide either some cash or maybe some check or something like that. But from the point of view of the software, we need to be sure, we need to like ensure just one thing, and that is that amount should always be positive. Okay, amount should always be positive. So we just put this check here: if amount is greater than 0, like if this amount is positive, then balance is equal to balance plus amount, or balance plus equal to amount. So I hope you know how this operator works from your computer programming course. Okay, so it is basically the same as writing balance is equal to balance plus amount. So this amount will be added into the balance if it is positive. Okay, so by mistake, if you provide negative amounts, that will not affect the transaction. You can convert that into a positive value, like you can find out the absolute value, but then again these decisions, like you have to think about these things from the whole system's perspective, and then you are going to provide documentation for these libraries, like what does this function do, what should be the amount value, what will this function do if the amount is negative or if the amount is positive, etc., etc. Okay, so you can specify, you can return some value here, and that value may specify like different types of errors. For example, if the user accidentally enters a negative value provides a negative value for the amount, so then you can return some value and say that the amount provided was invalid, so a transaction could not go through. If it is the correct amount, so you can basically specify that the transaction was successful. So you can do all sorts of things. Then the debit function. The debit function basically withdraws some amount from the account. Okay, and here you need to be sure, you need to ensure that the amount that you want to withdraw is not more than the balance. Okay, so if amount that you want to withdraw is less than balance, then this transaction can go, no problem. Then you can say balance minus equal to amount. Okay, then no problem. And not just that, so if this happens, then the transaction was successful. If this happens, then the transaction was successful. So you can say return true. Now I hope you understand, like, why did I add these curly braces. Okay, so before I wrote just one statement. So after the if condition, if there is just one statement, you don't need these curly braces to create a block. But if you have more than one statements, then you need to, and the execution of these statements is subject to this particular condition, then you need to create a block. Okay, so I hope like you know these things. How do these things work? Else, if the amount is not less than the balance, if the amount is not less than the balance, then what should happen? Then the balance should remain unchanged and you should return false. The balance will remain unchanged if you do not modify it. Okay, so in the second case, you just need to return a false value. That will tell the caller function that the debit was not successful. The debit was not successful. Okay, so this is our account class. This is our account class. Now let us test this class.
how are we going to test this class? We are going to basically create an account object or account objects, and we are going to call different methods for those objects. So let us create an account of two account objects. One account A1, the default account with default settings, and the other one with an initial balance. So say for example initial balance is say 5,000. Okay. So when this statement is executed, so the default constructor would be invoked by this declaration, and the overloaded constructor would be invoked by this declaration. So you'll see something printed there. Then let us find out the balance. Let us say balance of account A1. Okay. So what is that balance? So we have the get balance method. So we can say A1 dot get balance. So we'll get the balance of account A1. It would be 0. Okay, because it was created by invoking the default constructor, and the default constructor initializes the balance to the value 0. Then balance of account A2. So it is basically equal to A2 dot get balance. Okay. So A2 was created with an initial balance of 5,000. So you'll have 5,000 there. Then we can deposit some amount. We can say A1 dot credit. So we want to deposit some money into A1. Say for example A1 dot credit 20,000. Okay. And then we want to say A2 dot debit. We want to withdraw some money from A2, and that money is, say, we didn't know, like we just deposited 5,000 as initial balance in that account, and somehow we are trying to fool the bank and we want to withdraw 10,000. Okay, say for example, and we want to see like what happens. So can we withdraw 10,000 or not? And then we want to check the balance again of both these accounts. Okay, so the balance of A would be 20,000 and the balance of B would be 5,000, because we tried to withdraw more than the balance, so that transaction would not go successful and the balance would remain unchanged. Then we may try to deposit some money into A2. So let us deposit say 15,000, or let us say 16,000 into A2. Then we can check the balance of A2, or let us withdraws debit 7,000 say, and then let us print the balances of both these accounts. Okay, so this is how we basically test this account class. So let's see like what happens. Let us build and run this file and let's see what happens. So when this statement is executed, the statement at line number 7, so account A1 is created and A2, these two objects are created. A1 is created by calling the default constructor, and that is why you see this print message. Okay, so the default constructor was invoked for instantiating or creating A1. Then the overloaded constructor was invoked for creating or instantiating A2. Okay, the balance of A1, since it was created using the default constructor, so it is 0, and balance of A2 is 5,000, because we provided an initial balance of 5,000 to this account. Then we tried to do these transactions. So we deposited 20,000 into A1, which went successfully. Why? Because the balance of A1 after this transaction,
Yeah, so the balance of A1 after this transaction, it became 20,000. Okay, and we tried to withdraw 10,000 from A2. So the balance in A2 was 5,000 and we tried to withdraw 10,000. That did not go well. It wasn't successful. So the balance of account A2 was 5,000. Okay, so it remained the same. Achha. Then we deposited some money into A2, 16,000, and then we withdrew 7,000. So 16,000 plus 5,000, the amount that it already had. This is 21,000 minus 7,000. So this becomes 14,000. So after these two transactions, the balance of A remains unchanged at 20,000, but the balance of account B becomes 14,000. Okay. So this is the account class, and all the functions that we wrote for the account class, they work the way we wanted them to work. Okay. Now let us create these new classes, the savings account class and the current account class, and we'll create these new classes by extending the account class. We will not write any new class. Okay, so we will basically reuse the code that we wrote here for this class. Okay, so we are going to reuse this code, and it makes sense. Like, why should we rewrite these same functions again? Whether an account is a savings account or a current account or a Mahana Amdani account or any other type of account, if you want to read its balance, so you should just call this method. It's this simple. You should not be rewriting the same method over and over again for all these classes. Okay, this is the beauty of inheritance. It allows you to reuse your existing code. It allows you to reuse your existing code. How do you do that? This is how you do that. So we want to create a new class. Say for example, we want to create the savings account class, and we want to create this new class based upon an existing class. So how you specify that? You use a colon here, and then we say public account. Okay, and then the body of this class. Now we are creating a new class savings account, and we are specifying that this new class is based upon or inheriting from or is a subtype of an existing class, and that existing class is the account class. Okay, and here we have this keyword public. Now if you remember, in our last lecture we talked about these different types of inheritance in C++. Okay, so you can do public inheritance, you can do protected inheritance, and you can have private inheritance. Okay, public inheritance, protected inheritance, and private inheritance. So this is how you specify which type of inheritance do you want to do. So you can do public inheritance by using the keyword public here. You can do private inheritance by using the keyword private here, or by not using any keyword. So this is also private inheritance. Okay, this is also private inheritance. If you just specify that savings account class is basically an extension of the account class, or a derivative of the account class, or a subtype of the account class, so you can specify it this way. But this is private inheritance, and you should know what private inheritance means. Okay, if you want to do protected inheritance, so you can use the protected keyword here. That would be protected inheritance. Okay, so what are the implications of using these different types of inheritance, public, private, and protected? So the implications are on these functions. Okay, so these are all public functions. These are all public functions. Okay, these are all public functions. So what would happen to these functions? In the derived class, would somebody be able to use these functions or not? Okay, so we'll return to that later. Let us first try the public inheritance. So whenever you're extending an existing class, and whenever you're using inheritance, use public inheritance. Okay, for the time being. Now we
just by writing this statement, just by specifying that this new class, savings account class, is a derived class of the account class, we have created a new class, and that new class has all the attributes and all the behavior of the uh, account class. Okay, so it has all the behavior of the account class. And now we said that these constructors are not inherited. Savings account class will have its own constructors. It will have its own default constructor, but that default constructor will invoke this constructor automatically. Whether you specify it or not, it will do that. Now this is the class that we just created. Okay, we did not specify any member function for this class. There is no member function in here. Can we use it? Okay, yes we can. Why? Because although we did not add any member function, any new member function to the savings account class, since it is inheriting from the account class, so it has all the behavior and all the attributes of the account class. Okay, let us verify that if it is true. So let us see. Let us create two classes. Savings account S1. Let us create S1. We cannot create a savings account by providing it with some initial balance at the moment. Okay, so we cannot do that. Let us create a savings account S1. Okay, and let us try to do something with S1. So we have created S1. We want to know the balance of S1. Can we do that? Like, we did not write the get balance function for S1, but can we do that? Like, can we say balance of S1 is equal to S1 dot get balance? Okay, so you can see when I say S1, so I get all the public member functions and all the members of the account class in a drop down list. Okay, so yes, we can say S1 dot get balance. We can do that. So we will get the balance. Then let us deposit some money into S1. S1 dot credit. So let us deposit, say, 25,000 rupees into S1. Let us check the balance after that. Okay, let us debit some amount, debit, and let us debit, say, 5,000 from S1, and let us check the balance afterwards. What happens to the balance then? Okay, so let's see if it works. We just created a new class without writing a single line of code. Of course, if you like count the code that we have written for account class, so that may count, but other than that, like, we did not write any other code. We did not implement any other member function or anything like that. Okay, so let us see if it works or not. Let us build and run it, and it builds and runs fine. Now let's see, let us look at the output and correlate it to the code that we wrote. So the first statement is account A1 and A2. So this basically invokes the default constructor. This statement invokes the overloaded constructor, and then there is another output. This wasn't here before. Okay, so why is it here? It is here because we are creating a savings account class S1. Okay, and the savings account class S1 has a default constructor which we did not override. We did not override that default constructor. That default constructor is provided by the compiler, and that default constructor automatically calls the default constructor of the parent class, the account class. Okay, so the default constructor of the parent or account class is
invoked by the default constructor of the savings account class, the child class. ठीक है, child class का जो constructor है उसको भी हमने नहीं लिखा. That was provided by the compiler. That constructor function invokes the default constructor function of the parent class. ठीक है, so we talked about it कि जब आप एक क्लास से दूसरी क्लास डिराइव करते हैं तो डिराइव क्लास का अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी जो डायरेक्ट बेस क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. तो सेविंग्स अकाउंट क्लास की डायरेक्ट बेस क्लास है अकाउंट क्लास. तो आप जब सेविंग्स अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करते हैं S1 तो वो अकाउंट क्लास जो उसकी बेस क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करता है, वो आप यहाँ पे देख रहे हैं. ठीक है, देन वी से कि बैलेंस ऑफ S1, सो बैलेंस ऑफ S1 इज 0. जो भी अकाउंट क्रिएट होती है, नया अकाउंट क्रिएट होता है, उसका बैलेंस 0 होता है. ठीक है, फिर हम S1 में अमाउंट जमा करते हैं, क्रेडिट 25,000, फिर उसका बैलेंस चेक करते हैं, वो 25,000 होता है. फिर उसमें से कुछ डिपॉजिट डेबिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, और उसके बाद फिर बैलेंस चेक करते हैं तो वो 20,000 होता है. सो वी आर गेटिंग ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ द अकाउंट क्लास. ठीक है, just by saying in the savings account class, just by inheriting from the account class. So we created a new class by inheriting from an existing class. ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो दोनों क्लासेस हमने लिखी हैं, अकाउंट क्लास भी हमने लिखी है, सेविंग्स अकाउंट क्लास भी हमने लिखी है. बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जैसे आपको क्लास लाइब्रेरी जो है ना वो कोई और प्रोवाइड करता है. जिस बंदे, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन क्लास लाइब्रेरी है तो वो आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है, और माइक्रोसॉफ्ट उसका सोर्स कोड आपको नहीं देता. माइक्रोसॉफ्ट आपको वो बाइनरी फॉर्म में वो लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, बट यू कैन ऑलवेज एक्सटेंड दैट लाइब्रेरी थ्रू इनहेरिटेंस. तो आप नई क्लासेस अपनी क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन एन एग्जिस्टिंग MFC क्लास. आप अपना एक नया क्लास, अपनी एक नई क्लास क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको उस MFC क्लास की तमाम फंक्शनैलिटी इस क्लास में बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगी, और आप इसमें फिर अपनी कुछ नई फंक्शनैलिटी भी ऐड कर सकते हैं. एंड देन यू कैन गिव इट टू अनदर पर्सन जो कि उससे मज़ीद उसको एक्सटेंड कर सकता है. सो कोड रीयूज़ इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस इन प्रोग्रामिंग. ठीक है, इसके अलावा इसका एक और बेनिफिट भी है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. बट दिस इज़, यहाँ सेविंग्स अकाउंट क्लास में हमने ये कोई फंक्शन नहीं लिखा. ठीक है, ये सारे फंक्शंस ये सारा बिहेवियर हम इनहेरिट कर रहे हैं, ये काम भी हमने नहीं किया. बैलेंस एट्रीब्यूट भी हमने यहाँ पे नहीं वो किया, लेकिन ये एट्रीब्यूट भी हम इनहेरिट कर रहे हैं. ठीक है, नाउ लेट अस एक्सटेंड, ये तो हमने देख लिया कि आप अगर एक क्लास से दूसरी क्लास डिराइव करते हैं तो आपको जिस पेरेंट क्लास का बिहेवियर और पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स इनहेरिटेंस में फ्री मिल जाते हैं. यू हैव दैट फंक्शनैलिटी, यू हैव दोज एट्रीब्यूट्स, आप उनको यूज़ कर सकते हैं. लेकिन इनहेरिटेंस का एक और मकसद भी होता है कि आप नई क्लास जो क्रिएट करने जा रहे हैं वो इसलिए क्रिएट करने जा रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग क्लास है वो आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रही. ठीक है, तो अब वी वांट टू क्रिएट अ न्यू टाइप ऑफ अकाउंट क्लास, सेविंग्स अकाउंट, विच विल पे इंटरेस्ट टू इट्स कस्टमर्स. ठीक है, so we have a new attribute, double interest rate. Let us call it I rate, interest rate. ठीक है, and we have a new function here, member function here, which calculates the interest and returns the interest. ठीक है, so double calculate interest. So this function, it does not receive any argument. इसको किसी argument की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा बेस्ड अपॉन दिस इंटरेस्ट रेट एंड द करंट बैलेंस. जो भी मौजूदा बैलेंस है उसके मुताबिक ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा और वो रिटर्न करेगा कि मुनाफा कितना हुआ है इस अकाउंट पे. ठीक है, एंड सिमिलरली वी वांट टू प्रोवाइड कंस्ट्रक्टर्स फॉर द सेविंग्स अकाउंट क्लास एज वेल. ठीक है, तो सेविंग्स अकाउंट क्लास में पहले हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करना चाहते हैं. ठीक है, उसके बाद हम ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करना चाहते हैं. सेविंग्स अकाउंट क्लास का ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर में विल स्पेसिफाई टू थिंग्स. वन, डबल इनिशियल बैलेंस. ठीक है,
and second would be interest rate, I rate. ठीक, अच्छा. Now you need to understand this part as well. Its implementation would be interesting, so pay attention to that. Now let us implement these functions here. अच्छा, यहाँ पे आए. So here we need to specify that this is the constructor function of the savings account class. Oh, no. ठीक है, सेविंग्स अकाउंट क्लास का ये कंस्ट्रक्टर है. अच्छा जी. Similarly, this is another constructor of the savings account class. अच्छा. And this is a member function of the savings account class. ठीक है, this is a member function of the savings account class. Here we can write the bodies. अच्छा जी, ठीक है. अच्छा, सो लेट्स सी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम क्या करना चाहते हैं जी. पहला काम तो हम ये करना चाहते हैं कि हम ये प्रिंट करना चाहते हैं कि ये सेविंग्स अकाउंट क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है. ठीक है. अच्छा, ये खैर पहला काम नहीं है. दिस इज़ समथिंग एल्स. दिस इज़ वी वांट टू लाइक प्रिंट दिस मैसेज so that you know कि what is the calling sequence. अकाउंट जब डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर्स का कॉलिंग सीक्वेंस क्या होता है. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्ट मतलब डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा या बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा. कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा. ठीक है. अच्छा, लेट अस ट्राई टू डू समथिंग एल्स है. यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट क्लास का जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो क्या करता है, बैलेंस को इनिशियलाइज करता है टू 0. लेट अस ट्राई टू डू दैट. बैलेंस को हम से 0 की वैल्यू असाइन करना चाहते हैं. क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते. कैन वी डू दिस. नाउ बैलेंस इज अ प्राइवेट डेटा मेंबर ऑफ द अकाउंट क्लास. बैलेंस इज अ प्राइवेट डेटा मेंबर ऑफ द अकाउंट क्लास. इट इज ओनली एक्सेसिबल टू द मेंबर फंक्शंस ऑफ द अकाउंट क्लास और द फ्रेंड फंक्शंस और फ्रेंड क्लासेस ऑफ द अकाउंट क्लास. उसके अलावा किसी को एक्सेसिबल नहीं है. Now the savings account class is a derived class of the account class. It is neither its friend, it is not a friend class of this particular class. ठीक है, ये इसका friend class नहीं है, इसकी friend class नहीं है. So क्या हम savings account class के constructor में balance को directly access कर सकते हैं या नहीं कर सकते. ठीक है, नहीं कर सकते. हम ऐसा काम नहीं कर सकते. ये compiler the compiler will flag an error here कि you're trying to access private data member here. ठीक है. So let us keep that code. We want to basically look at that error. अच्छा, इसको नाम चाहे थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कर देते हैं. Here in the overloaded constructor for the savings account class, पहला काम एक तो हम ये मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं कि दिस इज बेसिकली द ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर. ठीक है, जो कि 2 डबल आर्गूमेंट्स ले रहा है, एक इनिशियल बैलेंस और एक इंटरेस्ट रेट की वैल्यू. ठीक है. अच्छा, दिस इज़ वन थिंग दैट वी वांट टू डू. अब ये काम तो हम कर लेते हैं, मतलब ये काम तो हम कर सकते हैं. लाइक इंटरेस्ट रेट जो है, सॉरी आई रेट, ये सेविंग्स अकाउंट क्लास का प्राइवेट डेटा मेंबर है. तो फ्रॉम विद इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ द सेविंग्स अकाउंट क्लास वी कैन डायरेक्टली एक्सेस इट. दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. प्रॉब्लम ये है कि ये जो इनिशियल बैलेंस है, ये हम कैसे बैलेंस में सेव करेंगे. बैलेंस तो हमें एक्सेसिबल नहीं है. लाइक ये काम हम नहीं कर सकते. ठीक है. बैलेंस और इनिशियल बैलेंस यानी ये काम हम नहीं कर सकते. ठीक है. सॉरी, बैलेंस इज इक्वल टू initial balance. We cannot do this. Why? Because balance is a private data member of the account class. It is not a private data member of the savings account class.
although बैलेंस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द सेविंग्स अकाउंट क्लासेस, ठीक है, सेविंग्स अकाउंट क्लास का ये एट्रीब्यूट है, किसी भी सेविंग्स अकाउंट क्लास के ऑब्जेक्ट में बैलेंस मौजूद होता है, ठीक है, ये एट्रीब्यूट इसका है, बट एक्सेसिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट क्लास को ये डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, इनडायरेक्टली एक्सेसिबल है, डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। अच्छा जी, लेट अस सी के क्या सूरत हाल ऐसी ही है जैसे कि हम कह रहे हैं, ठीक है, S2 और से यहाँ पे हम सेविंग्स अकाउंट क्लास में इनिशियली 100,000 1,00,000 रुपए डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सो लेट अस कंपाइल दिस फाइल। अच्छा जी, यहाँ पे हमें मुख्तलिफ़ किस्म के एरर्स मिल रहे हैं कि जी नो मैचिंग फंक्शन कॉल फॉर सेविंग्स अकाउंट और इंट, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट भी स्पेसिफाई करना होता है। इंटरेस्ट रेट से आजकल चलें 7% है, ठीक है, तो 0.07। अच्छा ठीक है, कंपाइल हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेट अस बिल्ड एंड रन। नहीं जी, बिल्ड एंड रन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इन कंस्ट्रक्टर सेविंग्स अकाउंट का जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, हम अकाउंट क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये काम हम नहीं कर सकते, ठीक है। फिर क्या होगा? दिस स्टेटमेंट मस्ट गो आउट। अच्छा, बैलेंस को अगर हम इनिशियलाइज करना चाहें तो उसके लिए आपको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये सेविंग्स अकाउंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, ये इम्प्लिसिटली कॉल करता है अकाउंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। तो अकाउंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और वो बैलेंस को इनिशियलाइज कर देगा टू 0। देखते हैं कि जी ये बात ठीक है या नहीं। हाँ जी, वो बात तो ठीक है। अब हमारा वो वाला एरर नहीं आ रहा। अब कौन सा एरर आ रहा है? अब हमारे पास एरर ये आ रहा है कि सेविंग्स अकाउंट क्लास का जो दूसरा ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है, उसमें भी हम बैलेंस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम भी हम नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं इस कोड में अब थोड़ी सी तब्दीली करता हूँ। ये इसको इस पार्ट को कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, लेट अस सी कि ये कैसे काम करता है। अच्छा जी, ये बड़ा ठीक अच्छा काम करने लग गया। अब आप देखें सेविंग्स अकाउंट क्लास S1 जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, यानी आउटपुट को देखें और उसको कोरिलेट करें विद द कोड। एट लाइन नंबर 7 वी आर क्रिएटिंग 2 अकाउंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, इसको भी हम कमेंट आउट करते हैं ताकि ये आउटपुट भी ज़रा कम हो जाए और हम सिर्फ देख सकें इनहेरिटेंस के जो नताइज हैं उसको देख सकें। Okay, so let us build and run. So we are creating only the savings account object S1. अच्छा, सेविंग्स अकाउंट ऑब्जेक्ट S1 को जब हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं S1। तो यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहे हैं। पहले अकाउंट क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, फिर सेविंग्स अकाउंट क्लास का डिफ़ॉल्ट, वो तो ऑटोमेटिक वो खुद ही होगा। सेविंग्स अकाउंट क्लास के अकाउंट कंस्ट्रक्टर को हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम बाय राइटिंग दिस स्टेटमेंट इन्वोक कर रहे हैं, लेकिन अकाउंट क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल नहीं किया एक्सप्लिसिटली। उसको सेविंग्स अकाउंट क्लास का जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो इम्प्लिसिटली कॉल करता है। आप उसको कॉल करें ना करें, ये उसको कॉल करेगा, ठीक है। और जब सेविंग्स अकाउंट क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अकाउंट क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है तो वो बैलेंस को इनिशियलाइज कर देता है टू वैल्यू 0 और ये लाइन भी प्रिंट कर देता है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई यू सी आपको ये आउटपुट नज़र आती है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे इसलिए प्रिंट हो रही है कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है। क्यों हुआ है? हमने तो अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया। हमने अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट तो नहीं क्रिएट किया, बट हमने सेविंग्स अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि which is a derived class of the account class. So whenever an object of the derived class is created, so first of all
its the constructor of its direct base class, that would be executed. Then its own constructor would be executed. अच्छा, यहाँ तो हमारे पास ये जो हायरार्की है ना, इसमें अगर आप देखें, सो वी ओनली हैव लाइक इसका लेवल, इट्स जस्ट वन लेवल, सिंगल लेवल. सेविंग्स अकाउंट क्लास है और उसका अकाउंट क्लास है. सॉरी, 2 लेवल्स हैं. दिस इज लेवल 1, लेवल 2. हमारे पास दिस हायरार्की कैन गो डीपर. फॉर एग्जांपल, इफ वी लुक एट दिस पर्टिकुलर हायरार्की से ये, सो यहाँ पे 3 लेवल्स हैं. जिंदगी अकाउंट इनहेरिट्स फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट विच इनहेरिट्स फ्रॉम अकाउंट. अगर आप जिंदगी अकाउंट टाइप का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो कॉल करेगा जिंदगी अकाउंट का जो कंस्ट्रक्टर, वो कॉल करेगा सेविंग्स क्लास का कंस्ट्रक्टर, और सेविंग्स क्लास का कंस्ट्रक्टर अकाउंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा. तो सबसे पहले अकाउंट क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, फिर सेविंग्स अकाउंट क्लास का, फिर जिंदगी अकाउंट क्लास का. तो यहाँ आपके पास जो आउटपुट होगी ना, वो होगी अकाउंट अकाउंट, देन सेविंग्स अकाउंट, देन जिंदगी अकाउंट. ठीक है, तो वो आपके पास 3 लेवल्स होंगे, यूँ समझिए. अच्छा, नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं. नेक्स्ट हम उसका बैलेंस प्रिंट कर रहे हैं, s1.get बैलेंस. तो वो 0 है. 0 क्यों है? फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट क्लास हम बैलेंस को एक्टिव नहीं डायरेक्टली एक्सेस कर सकते. तो वो 0 इनिशियलाइज इसलिए हुआ है कि सेविंग्स अकाउंट क्लास का जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसने इम्प्लिसिटली अकाउंट क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है. आप एक्सप्लिसिटली भी कर सकते हैं और इम्प्लिसिटली भी कर सकते हैं. ठीक है, दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं. तो वो उसने इन्वोक किया था, सो वहाँ पे वो इनिशियलाइज हो गया. फिर बाकी ये क्रेडिट और डेबिट, ये काम तो आप वैसे भी कर सकते हैं. s1.credit और s1.debit ये तो हम करते आ रहे हैं. ठीक है, तो ये मेथड्स तो आपको एक्सेसिबल हैं. नाउ लेट अस लुक एट द अदर वर्जन. दिस वाज ये हमने क्या किया, ये हमने सेविंग्स अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बाय इन्वोकिंग द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर द सेविंग्स अकाउंट क्लास. और हमने देखा कि वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करता है. ठीक है, आप एक्सप्लिसिटली नहीं इन्वोक करते, वो खुद ही इम्प्लिसिटली इन्वोक करता है. नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड पार्ट. अब S1 को हम क्रिएट करते हैं नॉट बाय इन्वोकिंग द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बट बाय इन्वोकिंग द ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर. ठीक है, यानी हम इसको एक इनिशियल बैलेंस प्रोवाइड करते हैं. से इनिशियल बैलेंस इज 10,000 और 100,000, और इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई करते हैं, इट इज़ 0.07. अच्छा, ये काम करेगा या नहीं करेगा, वुड दिस वर्क और नॉट. ठीक है, सो लेट अस सी. अच्छा जी, लेट अस बिल्ड एंड रन. अच्छा जी, आपका कोड बिल्कुल ठीक काम कर रहा है. ठीक है, लेकिन ठीक काम कर रहा है सिर्फ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि उसमें देयर आर नो सिंटेक्स एरर्स और देयर आर नो क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें सच एरर नहीं है, बट देयर आर फंक्शनल एरर्स. फंक्शनल एरर से क्या मुराद है कि यू क्रिएटेड अ सेविंग्स अकाउंट विद एन इनिशियल बैलेंस ऑफ 1 लाख रुपया, और समहाउ बैंक 1 लाख रुपया खा गया. कस्टमर से तो 1 लाख रुपया ले लिया, बट कस्टमर जब वो जाता है ATM मशीन पर अपना बैलेंस चेक करता है तो इट इज़ 0. ठीक है, तो वो परेशान बेचारा जाएगा टू द बैंक कि ये क्या मसला है. अब अगर आप देखें, सेविंग्स अकाउंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर हमने इन्वोक किया, दैट इज़ द ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, बट वो इम्प्लिसिटली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है. ऐसा नहीं होता कि वो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है तो वो इम्प्लिसिटली अब ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा. नहीं, वो इम्प्लिसिटली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेगा. डिराइव्ड क्लास का कोई भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो, अगर आप उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में बेस क्लास के किसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन को एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करते, तो वो खुद ब खुद इम्प्लिसिटली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा. और यहाँ इस केस में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा पर्पस सर्व नहीं करता. क्यों? क्योंकि हम इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द बैलेंस. वो इनिशियल वैल्यू बैलेंस को असाइन करने के लिए हमें अकाउंट क्लास के ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा,
और वो कॉल हम करेंगे एक्सप्लिसिटली बाय मेकिंग एन एक्सप्लिसिट कॉल टू दैट फंक्शन, तब ये कोड फंक्शनली करेक्ट होगा। ठीक है, हाउ कैन यू डू दैट? सो दिस इज हाउ वी डू इट। ये है सेविंग्स अकाउंट का ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। यहां से हमने सेविंग्स अकाउंट क्लास के ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। वो कॉल कैसे करेंगे? आया वो कॉल करेंगे हम फ्रॉम दी बॉडी ऑफ द कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है, या वो कॉल करेंगे हम इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू। सो लेट अस ट्राई बोथ। ठीक है, लेट अस सी कि अब हम यहाँ पे अकाउंट क्लास के ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हैं। ठीक है, और ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर को हम इनिशियल बैलेंस की वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? यानी हम बैलेंस को डायरेक्टली तो यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते, ये तो हम देख चुके हैं। ठीक है, और एक्सेस करना ज़रूरी भी है। तो वो एक्सेस कैसे करेंगे? वो एक्सेस करेंगे बाय इन्वोकिंग द ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर ऑफ द अकाउंट क्लास। ये हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये तो हमेशा पब्लिक ही होता है। हर कंस्ट्रक्टर फंक्शन पब्लिक मेंबर फंक्शन होता है, तो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, क्या ये तरीक़ाकार ठीक है जो हम यहाँ से कर रहे हैं? ठीक है, कि अकाउंट क्लास सेविंग्स अकाउंट क्लास के कंस्ट्रक्टर की ओवरलोड कंस्ट्रक्टर की बॉडी से हम अकाउंट क्लास के ओवरलोड कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। इज दिस फाइन? ठीक है, सो लेट अस लुक एट दिस कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा वो हमें करने नहीं दे रहा। ठीक है, ऐसा वो हमें करने नहीं दे रहा। स्पेशली अगर आप उसको एक वेरिएबल के थ्रू, एक पैरामीटर के थ्रू इनिशियल बैलेंस स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो वो ऐसा हमें नहीं करने दे रहा। तो हम अकाउंट क्लास के, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ सो दैट यू नो कि ऐसा काम हम नहीं कर सकते या हमें नहीं करने देता। अकाउंट क्लास के ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर को हम इन्वोक करेंगे फ्रॉम द इनिशियलाइजर लिस्ट। यहाँ हम लिख लेंगे इनिशियलाइजर लिस्ट में कि आप अकाउंट क्लास के ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करें एंड गिव इट दिस बैलेंस, द इनिशियल बैलेंस, ये जो है। ठीक है, बाकी इंटरेस्ट रेट को हम यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं, आई रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट। ठीक है, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स और नॉट। ठीक है, so this is fine, this is fine। अब अगर आप देखें ना, अब ये स्टेटमेंट एट लाइन नंबर 8, ठीक है, वो क्या किसको इन्वोक कर रही है? यहाँ पे हम सेविंग्स अकाउंट क्लास के ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर को हम इन्वोक कर रहे हैं, और फ्रॉम विद इन दैट ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर ऑफ द सेविंग्स अकाउंट क्लास वी आर एक्सप्लिसिटली कॉलिंग द ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर ऑफ द अकाउंट क्लास। तो अब यहाँ आउटपुट आपकी चेंज हो गई है, और उसका फ़ायदा क्या हुआ कि आपका बैलेंस सही तरीके से इनिशियलाइज हो रहा है। 1 लाख इनिशियल बैलेंस, पैसे नहीं घूम रहे। फिर आप उसमें क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं, तो वो अकॉर्डिंगली अपडेट होता है। ठीक है, अच्छा, नाउ अब सेविंग्स अकाउंट क्लास में हमने एक और मेथड भी ऐड किया था। लेट अस इम्प्लीमेंट दैट वन, और वो मेथड था डबल कैलकुलेट इंटरेस्ट। ठीक है, सो लेट अस इम्प्लीमेंट दिस मेथड, डबल कैलकुलेट इंटरेस्ट वाला। अच्छा, वो यहाँ पे है, हमने किया हुआ ऑलरेडी। अब ये क्या करेगा? ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, मुनाफा। 1 साल फर्ज किया बैलेंस पे गुजर गया और देयर इज सम फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो करंट जो बैलेंस है उसको से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट अगर फॉर एग्जांपल 10% है और अकाउंट बैलेंस है 1,25,000, तो 12,500 इंटरेस्ट रेट होगा। ठीक है, साल का इंटरेस्ट होगा, साल का। तो आप 10% को विच इज़ 0.1 मल्टीप्लाई कर देंगे विद द बैलेंस। बट दिस इज़ नॉट दिस सिंपल। ठीक है, ये इतना सिंपल नहीं है। अगर इतना सिंपल होता ना कि डायरेक्ट आप बस बैलेंस से उसको मल्टीप्लाई कर देते, तो ये तो बड़ी अच्छी बात होती। लोग जो है ना, जब इंटरेस्ट मिलने वाला हो 2 दिन पहले अपने अकाउंट में 10-15 लाख जमा करा देते, उनको इंटरेस्ट मिल जाता। तो बैंक्स वाले बड़े होशियार हैं। बाज़ बैंक्स वाले एवरेज बैलेंस को देख के आपको इंटरेस्ट देते हैं, बाज़ बैंक्स वाले मिनिमम बैलेंस पे देंगे। आपके अकाउंट में कहीं किसी टाइम पे मिनिमम बैलेंस जो है ना वो 1000 रुपये तक पहुंच गया, तो उसका अब चाहे उसमें 1 करोड़ हो, वो आपको 1000 के हिसाब से
बैलेंस देंगे, ठीक है। सो दिस इंटरेस्ट पे करेंगे। तो दिस इज नॉट दैट सिंपल, हमने यहाँ इसको बड़ा सिंपल रखा हुआ है। So how would you calculate interest? So you would multiply the balance with the interest rate, I rate. क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। Balance is a private data member of the account class. We cannot access it directly from the savings account class. फिर क्या करें? तो get balance function है ना, उसको यूज करें, ठीक है। So get balance function would access or retrieve the value of the balance and उसको फिर आप multiply करेंगे with interest rate and you would return this product, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको चलें यूज कर लेते हैं। अच्छा जी, so यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करते हैं कि जी you earned a profit of, and then we say s1 dot calculate interest, ठीक है। और फिर हम ये प्रॉफिट अकाउंट में जमा भी करा देते हैं, ठीक है। सो हम कहते हैं कि जी योर बैलेंस आफ्टर क्रेडिटिंग प्रॉफिट इनटू योर अकाउंट, एंड अकाउंट में मुनाफा जमा करने के बाद बैलेंस क्या हो गया, ठीक है। सो वो है जी s1 डॉट गेट बैलेंस, ठीक है। अच्छा जी, अकाउंट में मुनाफा कैसे क्रेडिट करेंगे, वो यूं करेंगे s1 डॉट क्रेडिट। अच्छा, क्या पैसे जमा कराएं जी, s1 डॉट कैलकुलेट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, जितना बनता है बस वो अकाउंट में जमा करा दें, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको बिल्ड एंड रन करें। सो दिस इज दी बैलेंस, उस पे प्रॉफिट 8,400, और ये 8,400 जब उसमें जमा कराएं तो 1,28,400 ये आपका अकाउंट बैलेंस हो गया आफ्टर दिस थिंग, जब प्रॉफिट उसमें क्रेडिट कर दिया जाता है। Now let us implement the second class in the hierarchy, that is the current account class, ठीक है। और current account class का एक additional data member है fee, and then there is debit function को हमने override करना है। account class का जो debit function है उसको override करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ जब पैसे जमा होंगे, पैसे जब हम withdraw करेंगे तो हमने कुछ फीस भी चार्ज करनी है, 15 रुपये, 10 रुपये, वटेवर, तो वो हम चार्ज करेंगे यूज़र से, ठीक है। सो लेट अस डू दैट, लेट अस क्रिएट करंट अकाउंट क्लास। अच्छा जी, सो क्लास करंट अकाउंट, एंड करंट अकाउंट जो है ना वो हम पब्लिक अकाउंट, पब्लिक इनहेरिटेंस हो रही है यहाँ अकाउंट क्लास से, ठीक है। अच्छा, करंट अकाउंट का एक नया प्राइवेट डेटा मेंबर है। अगेन मैं वो आपको सारी चीज़ें नहीं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि कैसे करंट अकाउंट क्लास में सारी वो एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर इनहेरिट हो गई हैं ऑफ द अकाउंट क्लास, वो ऑलरेडी हम सेविंग्स अकाउंट क्लास के केस में कर चुके हैं। सो यहाँ पे उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिंपल हम एक प्राइवेट डेटा मेंबर फ़ी ऐड कर देंगे, ठीक है। और देन वी विल ओवरराइड द डेबिट फंक्शन। ओवरराइड से क्या मुराद है? ओवरराइड से मुराद ये है कि ये आपका फंक्शन है अकाउंट क्लास का डेबिट फंक्शन। अब ये डेबिट फंक्शन करंट अकाउंट क्लास का भी फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि करंट अकाउंट क्लास इनहेरिट कर रहा है अकाउंट क्लास के तमाम बिहेवियर को और तमाम एट्रीब्यूट को। बट आप इसको करंट अकाउंट क्लास में ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड से क्या मुराद है? रीडिफाइन कर सकते हैं करंट अकाउंट क्लास में, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको जो देता आ रहा हूँ ना वो ये है कि देखें, से मेहरान गाड़ी है, ठीक है, 2010 और उससे पहले की जितनी भी मेहरान है उसमें जब आप एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं तो फ्यूल जो है वो कार्बोरेटर में ज़्यादा जाना शुरू हो जाता है और वो फिर आगे इंजन को प्रोवाइड करता है एयर फ्यूल मिक्सचर, सो उससे गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। सो आपका जो इंटरफेस है वो है एक्सेलरेटर का पैडल, और बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है
वो ये है कि फ्यूल जा रहा है कार्बोरेटर में ज़्यादा, और एयर फ्यूल का रिच मिक्सचर जो है वो इंजन में जाता है, और वहाँ से फिर इंजन स्पीड पकड़ता है। उसके बाद फिर जब उन EFI इंजन आया है महरान में, तो आपका इंटरफेस वही है, ठीक है, वही एक्सेलरेटर का पैडल है जिसको आप